Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. And today we are going to start a new chapter of microeconomics. Okay, production function. Now, most of the things what we have just discussed earlier in the earlier videos, that was from the consumer's point of view. Okay, supply से जब से हमने start किया है, that is from the producer's point of view or manufacturer or seller's point of view. Now, these chapter what we are going to do in future and today also, these are all the chapters which are related to the you can say the you can say this manufacturer or seller's point of view. Okay, it is producer's point of view. तो हमें जो भी मतलब हम जो जिस बारे में भी डिस्कस करेंगे, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इज इट इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप प्रोड्यूसर होते, वहां पे सप्लायर होते, मैन्युफैक्चरर होते या सेलर होते, तो आप क्या चीज पे सही करते, कहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा होता, कौन सी चीज आप सेल करते, क्यों करते, उसका रीजनिंग आपको जो है, लॉजिक आपको प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट इज प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, now what do you mean by production function? What we will discuss here, first of all, a producer make use of various inputs known as factors of production for the production of goods and services. So it means जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट देखते हैं, कमोडिटी देखते हैं, गुड देखते हैं, तो व्हाट हैपेंस हियर कि वो ऐसे ही तो बन नहीं आती. दैट इज द आउटपुट. ओके, बट बिहाइंड दैट आउटपुट देयर आर सो मेनी इनपुट्स. दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फोर टाइप्स. दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, तो कोई भी चीज आप जो प्रोडक्ट देखते हैं, कमोडिटी देखते हैं मार्केट में, सो उसमें ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं. दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, so production is an important economic activity as it enhances the utility of the product. Okay, it means increases the usefulness of the product by changing it in the form needed by the consumers. So जो consumers चाहते हैं उसी form में ही वो output इसका बनाया जाता है so that they can demand that product. Okay, in short, production means any process that converts a commodity or commodities into a different commodity. Okay, so production means it is a transformation. Simple, इट रिफर्स टू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स. यानी कि बहुत सी चीजें हमने रखी और उसका एक आउटपुट निकाला. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट गेटिंग अ वुड. ओके, वुड हमने रखा, वुड से हमने फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दी, टेबल बना दी. ओके, और एनीथिंग डेकोरेशन पीस. सो दैट इज द आउटपुट. इनपुट इज व्हाट? दैट इज द आपका वुड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया. ठीक है, उसमें लेबर आपने लगाया, उसने बनाया. ओके, कारपेंटर ने. एंड दीज आर द काइंड ऑफ इनपुट. सो इट रिफर्स टू द transformation of input into output. Okay, now production function is what? There exists some relationship between inputs and output of a firm. So function means relationship. Okay, so it shows the relationship between the inputs and the output. In economics, such a relationship is known as production function. Production function is an expression of the technological relation between physical input and output of a good. So technologically, क्या relation इनका है? That is between the inputs and the output of the good. Symbolically, OX is equals to function of between output of the commodity, okay, and inputs needed. So it means how many inputs are required to produce a commodity, that is the output. Okay, तो यही इसका functional relationship हम study करेंगे in this chapter. Okay, I hope it's quite understood here by you. Now we are going to start here short run and long run. Another concept in this short run and long run. First of all, for example, if I am, for example, if there is a farmer, मैं example के through आपको बताती हूँ, then you can easily get to know what is short run and long run. Okay, सपोज देर इज अ फार्मर. ओके, एंड उसका एक फील्ड है, उसमें वो सप्लाई करता है फॉर एग्जाम्पल 10 kg ऑफ वेजिटेबल्स. एग्जाम्पल्स के तौर पे बस आप इसको बस समझ लिए, राइट? 10 kg ऑफ वेजिटेबल्स हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब उसको जो है 10 kg वो आराम से बना लेता है, आराम से वेजिटेबल्स वो ग्रो कर लेता है. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी आप मान के चले, एक फार्मर है. ओके, अब उसके पास सपोज है कि उसके दूसरी मार्केट में उसको ऑर्डर आ गया कि उसको जो है फॉर एग्जाम्पल 15 या 20 kgs और चाहिए वेजिटेबल जस्ट आफ्टर 2 days. ओके, फॉर एग्जाम्पल, तब क्या करेगा वो फार्मर? ही कैन नॉट डू इट बिकॉज कुछ चीजें तो वो बढ़ा सकता है, दैट इज द इनपुट्स. ओके, जाके जो कि वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं. ओके, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर. ओके, दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, या रॉ मटेरियल भी उसी में सब ऐड हो जाएगा. तो फार्मर को जो ग्रो करनी है क्रॉप्स, तो उसमें क्या कर सकता है? वो सीड्स और ले लेगा, और लेबर जरूर चलिए अरेंज कर लेगा. ठीक है, पैसा भी इन्वेस्ट कर देगा अपनी तरफ से थोड़ा सा. ओके, बट the land is fixed, land cannot be extended, land आप फौरन जल्दी अरेंज नहीं कर सकते. सो दैट पीरियड इज नोन एज शॉर्ट रन. ठीक है, जहां पे कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एंड
other factors remains fixed. ठीक है, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज करके आप उसमें काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन क्या हो गया, जस्ट उसको ऑपोजिट. फॉर एग्जाम्पल उसी फार्मर को जो है बोला गया 2 दिन नहीं, आप हमें 3 मंथ्स के बाद हमें जो है ये प्रोडक्शन इसका चाहिए, वेजिटेबल्स का, ये जो भी है आउटपुट हमें चाहिए उसका. ठीक है, now in this 3 months he can do what, he can increase the number of laborers also, the raw material, okay, the machinery work also he can do, then the capital he can manage, okay, and last but not the least, land he can also extend. किसी और का भी लैंड वो ले सकता है रेंट पे, ओके, या अपना नया लैंड भी खरीद सकता है, राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ अ लॉन्ग रन इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज, दैट इज वेरिएबल. ओके, वेरिएबल मीन्स चेंज. नाउ लेट्स स्टडी. Short run means what? It refers to a period in which output can be changed by changing only variable factors. यानी कि आप बहुत कैपिटल चेंज कर लेंगे या लेबर आप अरेंज कर लेंगे, ओके, बट लाइक मशीनरी या मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव, ओके, यू कैन नॉट चेंज दैट एट, मतलब बहुत स्पीड में आप नहीं चेंज कर सकते. जस्ट फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम और अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, only few variable factors can be changed, okay. Then in the short run, fixed inputs like machinery, building, etc. cannot be changed. Same thing I have told you. Some factors are fixed and some are variable, and fixed factors cannot be changed during such a short a span of time. Okay. Long run, similarly वही example मान के चलिए कि farmer को एक जो है 3 months के बाद production उसको जो है अपना प्रोवाइड करना है या वेजिटेबल्स को सेल आउट करनी है मार्केट में. इट रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड. आउटपुट मींस द रिजल्ट, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज का, दैट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एवरीथिंग ही कैन चेंज. ओके, it's long enough for the firm to adjust all its inputs according to the change in the conditions. Okay, a firm can change its factory size, switch to new techniques of production, and purchase new machinery. Same example set up करिए अपने दिमाग में, and then you can easily make a difference between do the difference between the short run and long run. Okay, short run में जहाँ पे variable factors कुछ होते हैं जो few it means here period in which output can be changed by changing only variable factors, not fixed factors. Fixed तो fixed रहेंगे, fixed can be changed only in the long run. Okay, the difference between here meaning I've already told you, classification variable and fixed, and they are only, all factors are variable in the long run. Then price determination. Now here you have to make a understand it. In the short run, demand is more active in price determination as supply. So in the market, when two that is the demand and supply intersects, when these two lines intersect, that is known as the price. वहां पे price आप determine करते हैं, आप आगे के chapters में पढ़ोगे, ठीक है. Now here what is demand is more active, बिकॉज इन दिस शॉर्ट रन डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो रही. ओके, डिमांड आपने कर दी है लेकिन आप जो है अरेंज नहीं कर पा रहे, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज. ओके, तो इस वजह से क्या होगा, डिमांड की वजह से प्राइस को डिटरमिन करना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी से हियर इन दिस शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन. ओके, एंड इन लॉन्ग रन आपका सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. Okay, so in the long run, both demand and supply play equal role in price determination. Okay, so as both can be increased. Now next is variable factors and fixed factors. We have already discussed, but in just meanwhile, I'm just going to just read it for you all again. Okay, now variable factors that can be changed. Okay, variable factors that can be changed. Variable means change and fixed means वो fixed है, उनको change नहीं करना है, right? They cannot be changed. Variable factors, it refers to those factors that can be changed in the short run. It means variable comes in the short run period. For example, raw material. This is not raw, it is raw material, power, fuel, etc. Variable factors are not required in case of zero output. Okay, जहाँ पे zero output है वहाँ पे variable factors आपको required भी नहीं करते हैं. As output increases, requirements for variable factors also increases. So there is a direct relationship between the variable factors and the output. जैसे output आपका increase करेगा वैसे ही आप इसको भी increase कर देंगे. Okay. Then fixed factors, it refers to those factors which cannot be changed in the short run. Example, plant, machinery, building, etc. Its quantity remains same in the short run. We do not change, we cannot change the fixed factors, okay, in the short run, whether the level of output rise, falls, or becomes zero. Got it here? The difference between meaning variable factors refers to those factors which can be changed in the short run. Variable का मतलब ही होता है change. Okay, that can be changed in the short run. Fixed factors are those factors which cannot be changed in the short run. Okay, depending, short run बस एक span of time है खाली. डिपेंड करता है, जहां पे आप वेरिएबल चेंज कर देते हैं वो शॉर्ट रन हो जाएगा, जहां पे आप पूरे जितने भी वेरिएबल फैक्टर जितने भी फैक्टर्स हैं
आप सबको चेंज कर दोगे, जितने भी फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब चेंज हो जाएंगे, दैट इज नोन एज द फिक्स्ड, ओके। Then, or long run, relation with output, they vary directly with the output, that is there is a direct relationship between the variable factors and the output. As the output increases, variable factors also increases and vice versa, okay. And fixed factors, they do not vary directly with the output, okay. Okay, fine. Then the last one example, raw material, casual labor, power, fuel, they can be changed. आपने देखा होगा अक्सर होता है ना, जहाँ पे काम हो रहा है फैक्ट्री का या किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और लैंड और बिल्डिंग, तो वहाँ पे कहते हैं रॉ मटेरियल एंड कैजुअल लेबर्स, पावर, फ्यूल सब चेंज होता है, लेकिन लैंड आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, ओके। लैंड को आप, लैंड इज फिक्स्ड, मशीनरीज भी फिक्स्ड होती हैं, ओके। जब लॉन्गर पीरियड के लिए हम आते हैं, देन वी कैन चेंज इट, ओके। Long run में building, plant and machinery, permanent staff, etc. So these are examples of fixed factors. This can be asked in the MCQs also. Okay. Now in the next video, we will be doing here types of production function. Okay. Chapter बहुत आपका लेंदी नहीं है. It's very easy. And आगे जाके थोड़ा सा हम जब इसको करेंगे तो इसमें थोड़े से diagrams भी आएंगे. Okay. But it's very simple, easy to construct, easy to understand. Okay. And hopefully you enjoy the session. Okay. So please like, share, and subscribe my channel and follow for more. Thank you so much.